Hello students, welcome to the next lecture on the CSIR NET December 2025. Today I will explain you how you can solve the complex analysis questions with the help of fully shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the CSIR UGC NET. You can see I had upload complete solution of the CSIR NET December 25 such as differential equation, real analysis, LPP, Markov chain, numerical and many more lecture available in this playlist. Now in this lecture I will explain you how you can solve all those questions related to the complex analysis from the part B. The first question was on singularities. Fine. Second question is related to the convergence of the sequence. Third question is related to the integration. That means you are talking about the residue. And the fourth question is related to the holomorphic functions. How we can solve all these four questions with the help of the 1 minute time periods, and that's a very easy task. But the most important thing is how you can read the statement carefully. For example, if you are talking about the residue, that means your thinking is only to how you can calculate the residue, not to think whether the function is analytic or not. Similarly, in this case, when the sequence will be convergent, if I say xn is my sequence, when you can say the sequence is convergent, the only answer as I provided you, if you prove that limit is my finite, then the sequence is convergent, otherwise not. Fine. 90% स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है. वो क्यों होते हो? क्योंकि आप स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू कैन रीड और अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. देखिए, सीक्वेंस कन्वर्जेंट का एक ही कंसेप्ट मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी सीक्वेंस आ जाए उसकी कन्वर्जेंट के बारे में पूछा जाए तो लिमिट आपको फाइनाइट प्रूफ करनी है. फाइन. और इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करके दिखाऊंगा आपको मैं. फाइन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझिए. एक बार क्वेश्चन को समझ लिया आपने तो उसके बाद 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा. इफ यू वांट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और किस तरह से क्वेश्चन को समझे सो दैट आपके आंसर जल्दी आ जाए, फॉर दैट केस यू कैन ज्वाइन विद मी थ्रू माय व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ऑलवेज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्कैन एंड ज्वाइन इट्स ग्रुप. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को. एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं. S इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ द C कंटेनिंग 0. इसका मतलब इस S के अंदर 0 तो होगा ही होगा. F इज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन विद अ सिंपल पोल एट 0. इसका मतलब F कैसा होगा? 1/z की फॉर्म का होगा और 1/z² का होगा. नो, अगर z² हो गया तो इसका सिंपल पोल नहीं होगा ना, तब तो ये डबल पोल हो जाएगा 0 पे. और क्या हो सकता है? 1/sin z हो सकता है एंड सो. क्लियर? लेट गामा इज द सर्कल ऑफ रेडियस r विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर. वेरी सिंपल. सबसे पहले रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और इसेंशियल सिंगुलैरिटी. अगर आपने मेरा ये लेक्चर सुना होगा पहले से, दैट इज अ सिंगुलैरिटी PYQ ऑफ द सिंगुलैरिटीज. 50+ क्वेश्चंस हैं. इसमें मैंने आपको क्या शॉर्टकट टिप्स बताई थी. द पॉइंट z is equal to z0 is said to be, there are the 3 options. Find removable singularity, pole and essential singularity. कब कहा जाएगा? when this limit does not exist, fine, then you can call as the essential singularity. When this limit is my finite, then we call as the removable singularity. When this limit is my infinity, then this singularity is called as pole. तो यही चीज हम यहां पे करेंगे. अब इसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं. एक फंक्शन ले लेते हैं, f of z इज 1/z. फाइन. तो आपका f of 1/z कितना हो गया? विच इज माई z. नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड दिस, चेक दिस सिंगुलैरिटी एट 0. सो यू कैन फाइंड द लिमिट एट 0 विच इज फाइनाइट. फाइन. अगर ये फाइनाइट है तो इसका मतलब ये कभी भी पोल नहीं होगा और ना ही कभी इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा. ऑप्शन से आप, काउंटर एग्जांपल से आप डिस्कार्ड कर सकते हो आप. अब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती. तो इसके लिए मैं एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं. फाइन. तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर z ऐड कर दिया. तो जैसे मैंने z को ऐड करा,
फाइन, इसकी भी पोल सिंगल पोल ही रहा ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ 1 ओवर जेड, इट इज जेड प्लस 1 ओवर जेड, तो लिमिट निकालो जेड अप्रोचेस 0 पे, तो दैट विल बी 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी लेकिन रिमूवेबल नहीं होगी, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल। क्लियर? नाउ लुक एट द थर्ड ऑप्शंस। Integration of the function f is my 0. What does it means? That means by the residue theorem, the sum of the residues of the function f is my 0. 2 pi iota can never be 0. That means residue of the f will be 0. Sum of the residues at 0. So because 0 is my pole, so we can say the residue at the point 0 f प्लस अगर कोई और भी पॉइंट है इसके अंदर, फाइन, दैट विल बी 0. बट वी ऑल नोस f हैज अ सिंपल पोल, इसका मतलब क्या होगा, रेजिड्यू ऑफ द f एट द पॉइंट 0 कैन नेवर बी 0. ये तो 0 नहीं होगा ना, बिकॉज सिंपल पोल है, सिंपल पोल है तो रेजिड्यू कभी 0 नहीं होगा. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई एक और रेजिड्यू, एटलीस्ट कोई ना कोई एक और रेजिड्यू मिलेगा आपको Z0. इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, जिसका सम 0 बन जाए. मान लो इसका रेजिड्यू आपका आ गया नॉन जीरो, लेट्स से रेजिड्यू इज माई 3, फाइन, तो मतलब मेरा फंक्शन 3/z है, फाइन. तो अगर मेरा फंक्शन 3/z है तो रेजिड्यू 3 हो गया. तो एक पॉइंट में ऐसा बना सकता हूं जिसका रेजिड्यू -3 हो जाए, सो दैट सम विल बी 0. इसका मतलब एटलीस्ट वन एस के अंदर पॉइंट एक और होगा ही होगा. दैट मीन्स एस के अंदर एक तो 0 पॉइंट कंपल्सरी था और कम से कम एक पॉइंट और ऐसा होगा. इसका मतलब एस जो है वो सिंगलेटन नहीं होगा, और यही आपसे इन्होंने कहा है. फाइन. लुक एट द फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एस इज नॉट ए सिंगलेटन. एस इज नॉट ए सिंगलेटन, इसका मतलब मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से 0 और एक 2 ले लेता हूं, लेट्स से. कोरस्पॉन्डिंग मतलब 0 इज माई पोल, 2 इज माई पोल. तो ये दो फंक्शन बना लिए मैंने. फाइन. अब इसके ऊपर आपका रेजिड्यू कितना है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 इज 1. इसके ऊपर रेजिड्यू कितना है आपका, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शंस एट द पॉइंट 2 इज अगेन 1. सो द टोटल रेजिड्यू कितना हो गया आपका 2, विच इज नॉन जीरो. अगर टोटल रेजिड्यू नॉन जीरो है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द एफ इज नॉन जीरो. सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन विच हैड 0 इज कैंसल. फाइन. अगर आपने फंक्शन ऐसा बना लिया, यहां पे माइनस ले लिया, फाइन, देन द रेजिड्यू विल बी -1. उस केस में टोटल रेजिड्यू 0 हो जाएगा. बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. अगर मैं एक फंक्शन ऐसा बना लूं, लेट्स से 4, तो रेजिड्यू इसका 4 हो गया. फाइन. तो अगेन द टोटल रेजिड्यू विल नेवर बी 0. इसका मतलब ऑप्शन सी इज द ओनली राइट आंसर ऑफ दिस केस. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. The second question is talking about the sequence convergent. फाइन. तो sequence convergent मतलब आपको लिमिट की डेफिनेशन लगानी है. एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. H is holomorphic function although C such that limit H of Z is my 0. तो आपका H कैसा हो सकता है, ये हो सकता है ना आपका. फाइन. और कैसा हो सकता है, 1/sin Z हो सकता है. फाइन. पोल के बारे में बात नहीं कही, log Z हो सकता है आपका. फाइन. कोस नहीं हो सकता ना, कोस इंफिनिटी पे डिफाइन नहीं होगा. इज इट ओके? फाइन. नाउ f of n is defined like this way. D is open circle which of the following statement is my true. चलिए सबसे पहला केस h को ले लेते हैं 1/z. ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई आपकी. फाइन. इसके बेस पे मैं fn को निकाल लेता हूं. fn इज लिमिट k is equal to 1/zk. फाइन. नाउ यू कैन सी दिस इज माई जीपी सीरीज. तो इसका सम कितना हो गया, a फर्स्ट टर्म 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. सो दैट विल बी 1/z-1, 1 माइनस 1/zn. ये मेरा fn हो गया. अब योर टारगेट इज टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट. So your target is to find the limit fn
as n approaches infinity whether this is finite or not. फाइन, जब भी आप इसकी लिमिट निकालोगे दैट पार्ट इज कांस्टेंट, तो आपको लिमिट सिर्फ 1 ओवर जेड एन की निकालनी है. फाइन, नाउ 1 ओवर जेड एन दैट विल बी ईदर 0 और इंफिनिटी डिपेंडिंग अपॉन वेदर जेड इज माई लेस देन 1. इफ जेड इज माई लेस देन 1 देन दैट, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, अगर आपका जेड लेस देन 1 है तो दैट नंबर विल बी 0. फाइन, और अगर आपका जेड ग्रेटर देन 1 है देन जेड रेज टू पावर एन विल बी इंफिनिटी एंड सो ऑन. क्लियर, और यही आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है. क्लियर, अब इसका मतलब ये आपकी लिमिट देखिए इंफिनिटी आ गई, इसका मतलब ये सीक्वेंस फाइनाइट कब होगा, और सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट कब होगा, नॉट कन्वर्जेंट वेन एवर जेड इज लेस देन 1. फाइन, when the sequence is less than 1, less than z, the sequence is not convergent. तो आप देखिए z क्या कह रहा है, d के अंदर है, 0 नहीं होना चाहिए, the sequence is convergent. तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल हो गया. इसमें तो ग्रेटर देन 1, अगर z ग्रेटर देन 1 है तो फाइनाइट मिलेगा ना आपको आंसर, लेकिन काउंटर एग्जांपल लिया हमने एक, इससे हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन. क्लियर, चलिए आप कोई और एग्जांपल लेते हैं. अब ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो फाइनाइट आंसर ना दे आपको भी. क्लियर, चलिए अगेन अ वेरी सिंपल, जो ऊपर एग्जांपल्स लिखे उसी से देख लेते हैं. ठीक है, आपको बनाना है जेड की पावर के, तो साइन, ये अगर मैं ये ले रहा हूं देन इट्स साइन जेड के डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ, लॉग लेके आसान हो जाएगा आपका. फाइन, 1 ओवर लॉग जेड सेटिस्फाइड हो गया कंडीशंस. तो आप सबसे पहले एफ एन बनाते हैं इसका. एफ एन विल बी एन के वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 over log z raised to power k. So I can take an summation 1 over k log of z. K varies from 1 to n. So 1 over log z is a constant with respect to k, which is outside 1 over k. K is equal to 1 to n. Fine. Now if you take the limit as n approaches infinity, that part is infinity. Now you clearly say this series is my divergent because this series is my HP series. Fine, and HP series is my divergent series. That means the limit does not exist. If the sequence limit does not exist, that means this function, based on this function fn is not convergent. Fine, so fn is not convergent, so first option is also cancel out. Fine, now look at that again, यहाँ पे z greater than 1 है. Now if your sequence is not convergent, then it has not pointwise convergent. Fine, if it is not pointwise convergent, that means the function is not convergent pointwise to any holomorphic function. But he said convergent pointwise to the holomorphic function is the wrong answer, because the sequence is not convergent. Once the sequence is not convergent, that means sequence is not uniform convergent. Fine, if the sequence is not convergent, this implies the sequence is not uniform convergent. If it is not uniform convergent, it means it is not pointwise convergent, and if it is not pointwise convergent, it means it is not convergent to the any holomorphic functions. Now only the third option which is left behind, which is the right answer of the problem, and that's true because the sequence converges of all those capital D minus, fine, that means you are talking about -1 to 0. Fine, so the right answer is C is the correct answer of this problem. Okay, look at the next one. They are talking about the, okay, so your circle becomes 2 minus iota is less than r. Fine, center is my 2, 1, radius is my r. I think very simple. Fine, I will tell you the two different ways. First of all, tan of z. Clear? So over the circle 1. So can you find the pole of the tan z? Sine over cos. So the pole will be where
the cos z will be 0, that is a pi by 2, 3 pi by 2 and so on. Is it okay? Now over the circle 1, radius 1, your z will be fine. Now we will see whether these poles are lies in between or not. So it will be 1.57. ठीक है, तो सबसे पहले 1.57 को चेक करते हैं वेदर इट लाइज इनसाइड द सर्कल और नॉट. दैट विल बी माई 0.43 minus iota is less than 1. Is it true? That's wrong, because if you find the modulus 0.43 square plus 1, it can never be less than 1. That means 0, that is a pi by 2, lies outside the circle of radius 1. Once pi by 2 lies outside, 3 pi by 2 is also lies outside the circle. And once the function is lies outside, that means the function tan of z is my analytic. And once the function is analytic over the circle gamma 1, the answer is 0. So therefore first answer cancel, second answer is also cancelled. Clear? Now look at the second one. Second one is over the radius 2. So that means r is my 2. Again the poles are my pi by 2, 3 pi by 2 and so on. So firstly pi by 2 is, again it's a 4.3 minus iota. Fine. Is it less than? So 0.43 square plus 1 is it less than 2? Yes, this is my less than 2. Therefore z is pi by 2 lies inside the circle. Can 3 pi by 2 is lies inside? So what is the 3 pi by 2? 3 pi by 2 means 1.57 into 3, that is 7321. 5.71. If I substitute 5.71 minus 2 minus iota, is it less than 2? No, because this number you can see 3.71 square plus 1, it can never be less than 2. The only pole which lies inside is pi by 2. Fine. Therefore answer of the tan z is 2 pi iota, residue of the functions at pi by 2. And how you can find the residue? You can find the residue is limit z approaches pi by 2, z minus pi by 2 sin z divided by cos z. Now you can see this number will be sin z. So sin z is a finite, so it's a 0 by 0 form. I can apply the L'Hopital rule. 1 into sin z plus it's a 0 by 0 form. So z minus pi by 2 of sin z divided by minus sin z. Now clearly say this number will be 0 as the limit z approaches pi by 2. Answer is minus 1. So therefore 2 pi iota minus 2 pi iota is the correct answer. Fine. There is one more way. Instead of the residue, I can also write this number is sin z over cos z. Fine. And if you closely look about this case, you can see I can write the function is f dash over f. So I can apply the argument principle, which is nothing but n minus p, where n is a number of the zeros of f, p is a number of the poles of the f. So if you look about the derivative, that number is my minus of sign, so I can take it as a negative. Fine. If you choose f is my cos of z, how many number of the zeros inside the circle of radius 2? Only pi by 2. How many poles of the f? F is my cos of z, so there is no pole. So what is the answer of this case is negative n minus p. That will be minus 1 into 2 pi iota. So right answer is again 4 is the fourth, that is a D option is the right answer of the problem. For more details, you can watch my lectures called as the PYQ on the residue. More than 55 questions I had explained with the help of the shortcut tricks. क्या आपको अभी तक मजा आ रहा है जितने क्वेश्चंस करे हमने? फाइन. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. F
is a holomorphic functions and satisfied by these conditions. Which of the following statement is my true? X is uncountable, X is finite, every element of X and so on. सबसे पहले आपको F क्या दिया हुआ है? Holomorphic functions. What does it mean? That means the function is analytic. If the function is analytic, that means I can write the functions in terms of fine power series में लिख सकता हूं. Then your target is to define X is countable. What is X? सबसे पहले देखते हैं करना क्या है हमें. Find collection of all those mapping. तो इसका मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल, इसका मतलब आपको कार्डिनलिटी ऑफ एक्स निकालनी है. योर टारगेट इज टू फाइंड दी कार्डिनलिटी ऑफ एक्स. तो कार्डिनलिटी एक्स कैसे निकलेगी? योर टारगेट इज टू फाइंड दी नंबर ऑफ दी एफ मैप्स. यही तो देखना है आपको. योर टारगेट इज टू चेक दी नंबर ऑफ दी एफ मैप्स. फाइन. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. इसको मैं यहां लिख लेता हूं. कंडीशन क्या है आपके पास? एफ ऑफ 2z विच इज इक्वल टू fz डिवाइडेड बाय 1 माइनस fz स्क्वायर. फाइन. तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको मैं f ऑफ 2z माइनस f ऑफ z विच इज इक्वल टू f ऑफ z होल स्क्वायर इंटू f ऑफ 2z. क्लियर. चलिए अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं. फंक्शन आपके पास इंटायर है तो उसको मैं एक टेलर सीरीज में लिख सकता हूं, पावर सीरीज में लिख सकता हूं, प्लस a2 z स्क्वायर एंड सो ऑन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द f ऑफ 2z? f ऑफ 2z विल बी a0 प्लस 2 ऑफ a1z प्लस 4 टाइम्स a2 z स्क्वायर एंड सो ऑन. क्लियर. नाउ if I substitute the value here and we can equate the coefficients. क्लियर. तो पहले कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं दोनों तरफ से भी. लेफ्ट साइड पे f2z माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, कांस्टेंट विल बी 0. राइट साइड पे कांस्टेंट कब आएगा? पहली चीज का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद दिस, तो दैट इज ओनली इधर वाली लाइन से कांस्टेंट क्या आएगा? a0 स्क्वायर और f इससे क्या आएगा? a0. सो दैट इज a0 क्यूब. व्हाट डज इट इंप्लाइज? दैट इंप्लाइज a0 इज माई 0. फाइन. अगर आपका a0 0 हो गया दैट मीन्स आई कैन रिमूव दिस एक्सप्रेशन. देन यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ द z ऑन द बोथ साइड. दोनों को डिफरेंस करेंगे, कोफिशिएंट कितना आएगा? z कोफिशिएंट ऑफ द z विल बी a1. राइट हैंड साइड पे इसका z स्क्वायर का कोफिशिएंट कब आए? z का कोफिशिएंट कब आएगा? जब इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा अगर. फाइन. तब तो z कभी भी नहीं आएगा इसमें. फाइन. और जब z इसमें कभी भी नहीं आएगा, जब व्हेन यू मल्टीप्लाई देम द कोफिशिएंट इज माई 0. तो दैट इंप्लाइज a1 इज माई 0. जब a1 0 है दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कैंसल आउट. नाउ यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ द z स्क्वायर. इफ यू z स्क्वायर द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज 3 टाइम्स a2. अब z स्क्वायर कब आएगा? अगेन इफ यू स्क्वायर देम तो ये मिनिमम डिग्री 4 हो जाएगी. ओके. इफ यू मल्टीप्लाई देम इट कैन नेवर बी 0. दैट मीन्स a2 इज ऑल्सो 0 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब आपका fz क्या बन गया? ईच ऑफ द ai's आर माई 0. फाइन. दैट मीन्स आपका fz क्या हो गया? 0 फॉर ऑल z. फाइन. देयरफॉर आपके नंबर ऑफ मैप्स क्या बने? fz इज ओनली 0 मैप. फाइन. तो इस मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ द x is my 1 because there is only single map. f आपका क्या होगा? There is only single map. So if the cardinality is my 1, that is a finite. If the cardinality is finite, that means x is my countable. The first option is uncountable, cancel out. X is my infinite. That option is also cancelled because x is my finite. Fine. X has exactly one element, that's fine. Every element of x is an open map. Why it's not an open map? You can use the open mapping theorem. Fine. Because we all know f of z is my 0. Fine. If you take any open subset, let's say a is the open subset of the D, then what is the f of a? It is 0 and 0 is not open in the C. Fine. So that is the
cancel option. So the right answer is only D is my correct option of this problem. It's a very simple way. Otherwise, you can also think about second method is because f is holomorphic functions. So I can assume f is, say, let's say constant function firstly. Fine. If I substitute the value in the given expression, then it is k 1 over k square. Fine. If you open this bracket, it is 1 minus k square is equal to 1. That implies k must be 0 again. Fine. That means the constant function is only 0 function. So once it's a 0, the cardinality of the function f is my 1. Once the cardinality is 1, that means x is finite and countable. So infinite is cancelled, uncountable is cancelled. And open map, because 0 is not an open map in the C. Therefore, the right option is only D is my right answer. उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड दे आर क्वाइट इजी. फाइन, they are quite easy, but you have to think about how you can solve. You can see I had already uploaded all those lectures. Fine, you can watch it deeply and learn the concept quickly. We will upload the next lecture very soon. Till then, you can share this video with your friends. You can like and comment on the videos. Happy learning, students. Thanks for the watchings and thanks for the support.